Okay. Good evening, everyone. Today's class is on line. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. good evening, Flora. Good evening, Rennie. So today's class is on line graphs. I'll cover everything about line graphs. It'll probably take me two classes, not more than that. But today's the part one for that. Okay. And so if you miss anything or you don't understand anything, I'll just recommend that you watch this class again before joining the next class. Okay. Okay, sir. Anyway, let's start here. Okay, so how do I look at the line graph and how do I attempt it? So um, a line graph is a bit different from the other graphs in the sense that you know the data for every year. Like for example, you can 1991 here. You know the data for 1992, 93. So you know the data for every year. In other graphs, you know the data for certain years. Like it's not possible to show the data for every year in between in other cases. What do I mean by that? Let me just show it with an example. See, here you know the data for 1995. You know the data for 1998, but you know the data for 1996 as well. You can imagine it. Like, I know it will not be exact, but you know the approximate figure in 1996. You can imagine something here. So this is how this graph is different. And secondly, I call a line graph a time graph also because normally on the x-axis there is time. For example, here we have years. In most of the graphs, there is a time on the x-axis. Like you can see here, years. Again, I think years or months. So we also call it a time graph. Just a normal bit of information. Okay. Now let's begin on how to attempt it. First, I write the introduction, which is very simple. I just paraphrase the question. I take some information from the diagram if I can. For example, if you look here, the information I can take from the diagram is the year, is the countries. So I can see there are 5 countries. Here they have written 5 different European countries. Instead of writing that, I could have written the name of the countries in my introduction. So what do? I look at the question, I look at the diagram, I take some information from the question, I take some information from the diagram, and I write the introduction. I don't spend much time on it. I don't believe in paraphrasing a lot here because I don't think it scores a lot of bands. I make it really simple. So I'll write it in front of you. The line graph, a normal illustrates the, I'll just copy paste, percentage of workers with a day or more illness absence. This I've taken from the question. In 5 countries, I'm just writing the name of the countries in the Netherlands, Sweden, France, the UK, and Germany. From 1991 to 2001. Now, of course, you might believe like if I write between and here, a little bit of paraphrasing, I don't think it matters much. I don't care much about it. I told you I normally just copy paste from the introduction. I take some information from the diagram if I can, and I write my introduction. That's it. Nothing complicated here. Just one thing I want to add, there are some certain countries in before which we write the. For example, you can see I've written the before the UK, the before Netherlands. So if you don't know, I'll cover that later, which countries ke pehle the aata hai. We'll do that later. But you should know there are certain countries before which we have to put the. Okay, so that's my introduction. Does anyone have any doubts on how to write the introduction? It's really simple. It doesn't require much. Take the introduction, take the question, and take the diagram and write it. Nothing much. Anyone have any doubts with the introduction? No, sir. Okay. Now we'll come to the next part, the overview. Now this is important, and I really believe that you can score a lot of bands here if you write this way. Okay. So what do I write in the overview? First of all, I want to tell you if you want to score really well means 7 and above. You need to write 2 features in the overall, not one. What do I mean by 2 features? Just let you know. But remember, if you write 1 feature, I don't think you can score more than 7 bands. Okay. So for me, the 2 features are the first feature is the trend, which is pretty easy.
So the first feature is the trend. And you can all see what's the trend. Trend is what is happening over the period of time. Like what is the change happening over a period of time. Now, if you see here in Netherlands, you can see there's a fluctuation. It starts at 5, it goes down to 3.5, it ends up again at 5. It's going up and down, it's staying within the same range. I would call it a fluctuation. You can see the same thing happening in Sweden. It starts around 4, it goes down. It stays between 3 and 4.5. Not much change. So, Now, sir, it is Germany. We can write in the overall trend. Germany's Germany will what I write mean to Germany say, is Germany. coming. Yeah. Sorry, repeat. I'm trying to say is if the fluctuation is in all the countries where I could see is Germany's also is fluctuating, then Yeah, you UK, can consider Germany also. France. If for all the countries, we have to write the feature for all the countries. So you can consider Okay, it a fluctuation for all the countries. Basically, we have to okay. write the trend for all the countries. For me, I wasn't considering Germany to be a fluctuation. I was considering it to be relatively stable. See, it starts So, around, sir, can we consider any imagining anything? Means you looking can at the consider line it will graph. not make a big difference if even if you consider it relatively stable. In this case, it would be fine. If you consider it a fluctuation, it would be fine. There's not much difference. Okay, sir. But पता क्या है? Okay, sir. When you write the body paragraph, you have to write it's a हाँ, fluctuation. अगर body paragraph में okay, stable लिखा और overall में fluctuation लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा. okay, Okay. So understood. what you write in the overview and what you write in the body paragraph should match. For me, I Okay, believe sir. for me to write that it's fluctuated in the body paragraph would be difficult because data है ही नहीं देने के लिए. मैं क्या दूंगा? मैं ठीक बोलूंगा वन के पास ठीक था, एंडिंग में भी वन के पास था, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हुआ ही नहीं. So I would हाँ, rather हाँ. consider it as stable. I consider it to be stable here. Clear? Okay, sir. Okay. Okay, sir. हमने Sir, yeah. UK also, no? UK also I would consider. In fact, I would even consider France to be relatively stable. देखो, it's around 2.5. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. थोड़ा ऊपर नीचे के लिए मैंने word लगाना है. Relatively stable. I'm not going to call it stable. I'm going to call it relatively stable. Relatively stable means कि बाकियों के नजरिए में देखा जाए तो stable है. See, if you look at Netherlands, it's a proper dip. It's coming from 5 to 3.5, then back up to 5. It's a proper fluctuation. Here it's not. It's around the same thing. मतलब एक महीने एक साल ऊपर हो जाता है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और वहीं पे रहता है 2.5 कुछ ज्यादा ऊपर नीचे तो हुआ ही नहीं. It's around 2.5 only. So I would call all the three countries to be stable, even France, UK, and Germany. Okay, so I would write the overall trend here for all the five. Now, for 2, I have a trend of fluctuating. For 3, I have a trend of stable. That's what I would end up writing here. सबका लिखना है, याद रखना, किसी एक का नहीं रखना. Like I'll give you a normal scenario. You come to you come to me and you want to take admission at my center, and you ask me, sir, अपने students की performance बताओ. अब 2 बच्चों की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट और मैं उनका बता दूं बाकी 3 का ना बताऊं, it would be wrong. If I want to tell Hmm. you something really, I have to tell you for all 5. किसी को skip नहीं करना है. कुछ नहीं होता. सबका ट्रेंड लिखना है. Remember that. Write the trend for every country. It will not take you much time. देखो यहाँ पे 2 sentences बनने हैं. पहले दोनों को combine करके हमने लिख देना fluctuating and नीचे तीनों को combine करके लिख देना relatively stable. So अगर तुम 10 भी लिखोगे, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनको हम 2-3 कैटेगरीज में ही डिवाइड करके लिखेंगे. It will not जी. take you much more time, but write for everything. So how would I end up writing here? I would write, so the percentage of workers, the percentage of ill workers or workers with illness leave remain fluctuated in the Netherlands and Sweden while it remained. Here I would use the word relatively stable. Relatively stable in the other 3 countries, or you could have written their names as well. And in the end, I'll write over the given period, just to show that I'm talking about this period from 1991 to 2000, whatever, 2001. So that would be my first feature. Anyone has any problems with my first feature here? Any doubts? Anything that you're confused with?
Okay, good. Here, I just want to tell you one common grammatical grammatical mistake that my students make is they end up writing was fluctuated here, which would be wrong. It's fluctuated. See, I'll tell you a very clear thing why the students make this mistake. I know. See, if I have a normal sentence, I play cricket, and I want to make the past of it, I would just say I played cricket. I would not say I was played cricket. So students think that was denotes the past. Was does not denote past in all scenarios. Here, you already have the word fluctuated. It is telling us that this happened in the past. Here also have the word remained. It's telling me it's in the past. I do not need to write a was here. That would change the sentence formation. That would make it passive and it would be the wrong sentence formation. So don't make the small mistake. Okay. Moving on. Now I'm coming to the second feature. For writing the second feature, I use a connector here, like also, or in addition, or furthermore, something like that. Moreover, any word besides that, which means इसके अलावा बस एक और बात बतानी है तो एक और बताने के लिए कुछ भी यूज कर लो in addition यूज कर लो also यूज कर लो apart from this anything whatever you like remember you're writing one graph मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी चूज कर लो पर एक रखना ताकि तुम कुछ उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन गलत कर रहे हो तो मेरे को पता चल जाए सो आई एम जस्ट सेइंग कीप इट वन पिक एनीथिंग आई एम नॉट सेइंग डोंट पिक अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट पिक बिसाइड्स दैट कोई भी ले लो पर हर बार वही लिखो you don't need to have a trial and error different things okay so after writing this I'm picking in addition okay after writing this you're going to write the second feature now the second feature I'm going to give you the same example that I gave you. Like I have 5 students in my class. So first I told कि 2 में increase हुए 3 के नहीं increase हुए 3 के stable रहे. Second thing that I would tell someone is topper कौन है मेरी class का topper कौन है. I would probably end up saying that this is ये मेरे को सबसे ज्यादा expectations इससे है मेरे को लग रहा है इसके बहुत अच्छे bands आएंगे. He's really hard working. रोज चेक कर आ रहा है रोज मेहनत कर रहा है. I would probably talk about that person. So here also we are going to do the same thing. We are going to talk about the topper. But remember, the topper can change. What do I mean by that? See, in 1991, Netherlands was at the top. All the other countries were below Netherlands. Okay. In this case, in this graph, every year Netherlands is the top. If you can look here, the first year, the second year, the third year, the fourth year, every year Netherlands is the topper. Hold on. Okay, just hold on. Yeah. So in every year, Netherlands is the topper, but it is not necessarily so. If you look at the next graph, see, in the beginning, it was Canada, but after that, it was Netherlands. So look here. See, in the beginning, it's by telephone. Telephone is the topper till here. All the other ones are below it. But from here onwards, it's in person. सो टॉपर्स डू चेंज देखो अगर मैंने 10 मॉक टेस्ट लिए जरूरी थोड़ी है कि 10 के 10 में एक ही टॉपर होगा तो पहले में अगर नीदरलैंड्स है तो सेकंड में कोई और हो सकता है अब यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि मैंने ऐसे नहीं करना मैंने सिर्फ पहले ईयर का टॉपर नहीं बताना मैंने सिर्फ लास्ट ईयर का टॉपर नहीं बताना मैंने सारे ईयर्स का टॉपर बताना है मैंने शुरू से शुरू करना है और मैंने टॉपर बताना है सो देखो हाउ वुड आई एंड अप डूइंग दिस इस केस में तो एक ही टॉपर है नीदरलैंड्स शुरू से लेके एंड तक सो आई विल प्रोबेबली राइट दैट कि सबसे ज्यादा कहाँ पे थे वर्कर्स विद इलनेस एब्सेंस नीदरलैंड्स में इन ऑल द ईयर्स सारे ईयर्स में ऐसा पर हर बार ऐसा नहीं होगा जब नहीं होगा उसका भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सो आई विल राइट व्हाट हियर so I'll say Netherlands had the Netherlands always the Netherlands had the highest proportion or maximum proportion of workers with illness absence throughout the given period. Throughout means nothing but ke sara shuru se leke end tak. That's what it means. Throughout the given period. Throughout the given period. So here I'm writing throughout. This is my second feature where I write the topper. अब जब टॉपर चेंज होता है मैं वो वाला भी एग्जांपल करके दिखाता हूँ बट डू यू गेट माय 2 features that I write in my overview. First feature, trends. Second feature, topper. Do you understand the 2 features or does anyone have any doubt here? No, sir. No, clear? Anyone else?
Yes. Okay, so now I'll show you this case. अच्छा, अब मेरे को बताओ, टॉपर बताओ, जान में कौन है टॉपर? दिस टेल मी, मैक्सिमम इंक्वायरीज कौन से मेथड से हो रहे हैं? दीज आर द 3 तो मेथड्स. टेलीफोन And टेली telephone. ठीक है, जनवरी में, मार्च तक सबसे ज्यादा इंक्वायरीज टेलीफोन से हो रही है, राइट? Right. यस सर, मार्च. ओके, आफ्टर मार्च सबसे ज्यादा इंक्वायरीज कौन से मेथड से हो रही हैं? In person. इन पर्सन. ईमेल ईमेल नहीं, ईमेल तो ये नीचे आ रहा है, ये वाला In नीचे आ person. गया, इन पर्सन. इन पर्सन, यस सर, यस ठीक सर, है, वो इंक्रीज हो गया है। वो इंक्रीज, पर इंक्रीज डिक्रीज मैटर नहीं करता, टॉपर देखना है. सी, ये मत देखो वो ऊपर जा रहा है, ये देखो वो सबसे ऊपर है. ओके, देखो इन पर्सन ठीक के है, नीचे है, कौन नीचे है? टेलीफोन. ईमेल भी उसके टेलीफोन नीचे है. ठीक है, तो उसके सबसे नीचे, ऊपर कौन है? इन पर्सन, ठीक है, Person. ये नहीं देखना कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो हम पहले लिख चुके हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज है. वो मत देखना, टॉपर का मतलब कुछ और है. ठीक है, ठीक है, टॉपर का मैं तुम्हें को एक एग्जांपल देता हूँ. देखो, ये डिक्रीज हो रहा है, कैन यू सी दिस लाइन डिक्रीजिंग? यस सर, ठीक है, ये एक लाइन है, ये इंक्रीज हो रही है, डू यू एग्री? और एक ये लाइन है. Yes. ठीक है, ए बी सी. ठीक है, अब मेरे को बताओ टॉपर कौन है? सर बी, आई थिंक बी इंक्रीज हो रहा है। और बी टॉपर थोड़ी है, टॉपर कौन है? यही बात सिखानी है मेरे को. देखो, कौन है टॉपर? थिंक, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? सर तो ए है, सर ए है। है ना, यही तो मैं बात समझा रहा हूँ, इंक्रीज का मतलब कुछ और होता है. वो तो हम लिख चुके हैं पहले. अब हम क्या लिख रहे हैं? ओके, टॉपर लिख रहे हैं. वो नहीं देखना कि वो ऊपर जा रहा है कि वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है, वो बाकियों से ज्यादा है. हमें ये देखना है जो ठीक है, सबसे सबसे ऊपर है. देखो, पहला मॉक टेस्ट बहुत इजी था, तो ए के 8 आए. अब सेकंड मॉक टेस्ट मैंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया, तो ए के बैंड्स गिर गए. पर बाकियों के बैंड्स ए से फिर भी कम है, बी के 6.5 हैं, तो फिर भी ए क्या रहेगा? टॉपर ही रहेगा. क्योंकि बी के तो उससे कम ही रहेंगे ना, बी के 6 थे पहले, 6.5 हो गए, चलो बी ने इंप्रूवमेंट कर ली, तब भी ए से वो नीचे है. अगर वो ए के ऊपर लेके जाता है, अगर 7.5 होता है, तब टॉपर बदलता, पर मेरी फिर लाइन ऐसे होती, ए को काट के ऊपर जा रहा होता बी, पर एक बी ठीक है, ऊपर काट के नहीं जा रहा. इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, सो वी हैव टू राइट द टॉपर. तो अब टॉपर है, देखो चेंज हो रहा है टॉपर, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं प्रॉपर बताऊंगा कि जनवरी से मार्च तक इन पर्सन ये टॉपर था टेलीफोन, और मार्च के बाद, मार्च से लेके जून तक कौन टॉपर है? इन पर्सन. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर. और टॉपर का मेरा मतलब है हाईएस्ट या मैक्सिमम. सो द मैक्सिमम inquiries were made. I know you didn't read the question, but don't worry. सबसे ज्यादा इंक्वायरी कौन से मेथड से हो रही है? बाय टेलीफोन till मार्च तक. While after March, the maximum inquiries were made in person. देखो, मैंने स्टार्टिंग से लेके एग्जामिनर को एंडिंग तक का बता दिया. मैंने बोला मार्च तक सबसे ज्यादा टेलीफोन से हुई, और मार्च के बाद सबसे ज्यादा इन पर्सन. मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक एग्जामिनर को टॉपर बताया. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, जब मेरे को लिखने में ऐसे लग गया, ये एक फीचर है. तो हमारे 2 फीचर्स हैं. अब दूसरा फीचर जो है वो तुम मेरे को बता सकते हो तीनों के ट्रेंड्स. चलो, लेट टेल मी द ट्रेंड्स ऑफ ऑल 3. फर्स्ट का क्या ट्रेंड है? इन पर्सन का बताओ, व्हाट्स द ट्रेंड? इंक्रीज हुआ के डिक्रीज हुआ के फ्लक्चुएट हुआ के स्टेबल रहा? सर इट गॉट Fluctuate. फर्स्ट इंक्रीज एंड, या इंक्रीज हुआ है सर, वो इंक्रीज हुआ ना. थोड़ा सा Increase फ्लक्चुएट हो. हुआ था। फ्लक्चुएट थोड़ा सा क्या, एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 400. Oh. जैन से स्टार्ट हुआ है, और जान 400 में, से और कहाँ पे खत्म हुआ? व्हाट्स द फाइनल वैल्यू? 1200। तो तुम इसको इंक्रीज मान सकते हो ना. देखो, हाँ जी, हाँ जी सर। 100 से 400 से 1200 हो गया. ठीक है, ये भी अगर तुम देखो 800 तक, यहाँ तक स्टेबल रहा, पर एंड में एंड कितना हुआ? 1100. इसको भी हम इंक्रीज मान लेते हैं. 1100 आया। हाँ, 11 इंक्रीज. इसको हम क्या मानेंगे? सर ये तो डिक्रीज में है। डिक्रीज है. तो हमने ऊपर दोनों को इंक्रीज ले लिया, इसको डिक्रीज ले लिया. ये मेरा सेकंड फीचर है जो हम पहले लिख चुके थे. या बाद में लिख दो, कोई मैटर नहीं करता. तुम दोनों फीचर्स लिखने हैं, कोई भी पहले लिख दो, कोई भी बाद में लिख लो. ऑल्सो इंक्वायरीज, तीनों का बताएंगे. तो पहले दोनों मेथड्स का क्या हुआ? इंक्वायरीज मेड इन पर्सन
and by telephone increased. While inquiries made by email and letter decreased over the given period. देखो इंक्रीज डिक्रीज में मैं हमेशा ओवर द गिवन पीरियड एंड में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो इंक्रीज डिक्रीज में हमने तीनों का बताना है। मैक्सिमम में ये डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे 2 मैक्सिमम थे, कई बार 3 भी हो सकते हैं, बाद में जाके कोई और मैक्सिमम हो जाए, मुझे नहीं पता। पर पर यहाँ पे 2 ही है। पहले वाले केस में एक ही मैक्सिमम था, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, पहला वाला हमने करा उसमें एक ही मैक्सिमम था। तो इट डिपेंड्स, जितनी मैक्सिमम यहाँ पे देखो एक ही मैक्सिमम है नीदरलैंड शुरू से लेके एंड तक, तो हमने लिखना है। और मैं एक बात बताऊंगा, मैक्सिमम जब लिखोगे ना जरूर बताना कब मैक्सिमम था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थ्रू आउट द गिवन पीरियड, यहाँ पे लिखा टिल मार्च, आफ्टर मार्च, मार्च तक और आफ्टर मार्च। टिल मार्च टेलीफोन था, आफ्टर मार्च इन पर्सन था। तो मैक्सिमम को क्लियरली बताना है कि कौन मैक्सिमम, ठीक है। इंक्वायरीज में तो तुमने सबका लिखना है, सबका लिख दो कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, जो भी हुआ। 2 का इंक्रीज है, एक का डिक्रीज है, लिख दिया। सो दिस इज माई ओवरव्यू। अब अगर तुम ये 2 फीचर्स अच्छे से लिखोगे यू विल एंड अप स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो एक मैक्सिमम का और एक ट्रेंड का, दोनों अलग अलग लिखने हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट्स? ओके, So could you please show the second, the trend, the question of the second one, sir? I couldn't see the question. yeah. Okay. ठीक है, कि कितनी इंक्वायरीज करी गई कि इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाके कितने लोगों ने इंक्वायरी करी। क्लियर? इट्स लाइक हाँ दैट। जी। सो नाउ लेट्स कम टू बॉडी पैराग्राफ। देखो बॉडी पैराग्राफ्स के ना मेरे हिसाब से 2 मेथड्स है। तो मैं पहला मेथड पहले करवाता हूँ, फिर सेकंड मेथड करवाता हूँ। देखो अगर तुम देखो ना, इसके अंदर तुम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहली दोनों लाइनें अलग से लिख सकते हो, दूसरी बाकी तीनों लाइनें एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। क्यों? पहली दोनों का ट्रेंड सिमिलर है। कैन यू सी कि पहले ये डिक्रीज होती हैं, फिर ये दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहले दोनों को हम इकट्ठे लिख सकते हैं, दोनों का ट्रेंड नियरली सेम है कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। और आखिरी तीनों का ट्रेंड क्या है, सेम है कि तीनों में क्या है, स्टेबल है। फ्लक्चुएशन। हाँ, फ्लक्चुएशन एक स्टेबल है, जैसे आपने बोला, मैंने स्टेबल लिखा था तो मैं स्टेबल लिख रहा हूँ। इफ यू राइट अ फ्लक्चुएशन यू कैन राइट इट अ फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो अब ओके मैं डिवाइड कर दूंगा इनको पैराग्राफ्स में। मैं बोलूंगा पहले 2 को मैं फर्स्ट पैराग्राफ में लिखूंगा, बाकी तीनों को मैं सेकंड। पर ये याद रखना, पहले दोनों को मैं फर्स्ट पैराग्राफ में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वो नंबर 1 एंड नंबर 2 है। मैं उसको फर्स्ट पैराग्राफ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उनका ट्रेंड सेम है। वो दोनों क्या हो रही हैं, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। यही बात मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। देखो अगर मैंने ये वाला ग्राफ ऐसे करना होता तो बताओ पहले वाले पैराग्राफ में मैं कौन सी 2 लाइनें लिखता? विच 2 लाइन्स इन द फर्स्ट? In person and by telephone. In person and by telephone in the first line, and by email in the second paragraph, in the first paragraph, and by email in the second paragraph. Why? क्योंकि ये दोनों इंक्रीज हुए हैं, इनको एक पैराग्राफ में लिखना है। ये डिक्रीज हुआ है, इनको एक पैराग्राफ में लिखना है। डू यू गेट द पॉइंट? अगर डिक्रीज वाले 2 होते हैं वो इकट्ठे लिखता। सो इट डज नॉट मैटर कि वो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 है, वो नहीं मैटर करता। इधर भी देखो, लेट्स देखो अगर मैं अब डिवाइड करूं तो let's just divide them. So first line I would say it's a decrease या fluctuation। 50 से 60 हुआ but end 40 पे हुआ। इसको fluctuation भी मान सकते हो, decrease भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। Let's imagine I consider it a decrease। ये वाला जो लाइन है इसको भी मैं decrease मानूंगा because it started at 55, it ended up around 40, so इसको भी मैं decrease मान रहा हूँ। Third line I would consider it stable or slightly increase, and fourth line I would consider it definitely increase क्योंकि it started at 10, it ended at 20। So ये दोनों increase, ये दोनों decrease, तो ये दोनों decrease वाले एक पैराग्राफ में आएंगे, ये दोनों increase वाले एक पैराग्राफ में आएंगे। तो इनको ओके ऐसे डिवाइड करना है, ये फर्स्ट मेथड है। बस ट्रेंड्स के हिसाब से डिवाइड कर दो, जिनका ट्रेंड इंक्रीज है उनको एक पैराग्राफ में, जिनका डिक्रीज है उनको एक पैराग्राफ में।
स्टेबल वाले एक में, ऐसे 2-3 पैराग्राफ बन जाएंगे। मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर कोई जैसे 2 इंक्रीज है, एक डिक्रीज है, एक स्टेबल है, तो पहले पैराग्राफ में 2 इंक्रीज, दूसरे में पहले स्टेबल वाला, यहाँ डिक्रीज वाला, फिर स्टेबल वाला भी डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं डिवाइड कर लेता हूँ। बेसिकली यू आर डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स। ट्रेंड्स अगर सिमिलर होंगे उनको इकट्ठे लिखना है, ट्रेंड्स अगर डिफरेंट होंगे उनको डिफरेंट वे में लिखना है, उनको डिवाइड करके लिखना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये कैसे लिखना है तो मैं एक पैराग्राफ करके दिखाता हूँ, फिर इस मेथड की प्रॉब्लम्स एंड विल कम टू द सेकंड मेथड। सो अब ये लेते हैं, चलो सो इन दोनों का लेते हैं। चलो पहले नीदरलैंड्स की बात करते हैं। नीदरलैंड्स, और हमने स्वीडन को फर्स्ट पैराग्राफ में लेना है, और इकट्ठे ही लिख रहा हूँ तो डेटा भी इकट्ठे शुरू कर देता हूँ। तो आई से के 5 and 4, अराउंड 4.9 और 4 ले लेता हूँ। ठीक है, so I'll say in detail. So when I write the body paragraph, I start by writing in detail. Why do I write in detail? Because I want to say कि पहले मैंने आपको overview दिया था, अब मैं आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूँ. So in detail, the percentage of workers with illness absence was around 4.9% and 4% in मैंने इकट्ठे दे दिया in the Netherlands and Sweden respectively. Then I write the year in 1991. ठीक है, that's it. I gave the data for the first because I'm writing them. Then I'll say कि ये decrease हो गए. कब तक decrease हुए? यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है दोनों के दोनों around 1996 तक decrease हुए हैं. So I'll write that कि 1996 तक दोनों decrease हो गए. See, यहाँ पे अब तुम कह सकते हो यहाँ तक तो सर stable था. मेरे को पता है यहाँ तक stable था. But पता है क्या? You have to focus on this line. Summarize the information by selecting and reporting the main features. So देखो, अगर मैं इतनी इतनी डिटेल के बारे में लिखने लग गया ना कि यहाँ तक स्टेबल था, तो मेरा ग्राफ खत्म नहीं होगा. आई वुड नीड अ लॉट मोर वर्ड्स. सो यहाँ पे मैं अपने आप ये assumption मान रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं इंपॉर्टेंट 1960 तक बताता हूँ कि 1960 तक डिक्रीज हुआ था, 1960 के बाद इंक्रीज हुआ है. मैं इसको इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ. मैं ये बात, छोटी सी बात कि यहाँ तक ये स्टेबल रहा, इसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ. So I hope it is clear. You can ignore the minor details. Okay, so I'll end up writing कि in the next कितने सालों में, let's see, 1991 से लेके 1996. I would say 1, 2, 3, 4, 5 in the next 5 years. You can do the maths as well. In the next 5 years, the proportion decreased slightly in both the countries and reached okay. So पहले वाले की 3.5 and दूसरे वाले की 3. So I would write 3.5% for the former. Former का मतलब होता है पहले वाला, and 3% for the latter. And I'm done. In the next 5 years, पहले वाली की दोनों की decrease हुई and reached 3.5 पहुंच गई former की and 3% पहुंच गई latter की. So I've given the data till 1996. और अब मैं लिखूंगा 1996 के बाद. अब यहाँ पे मैं contrast word डाल रहा हूँ, which is however. And can anyone tell me why I'm using a however now? However means पर जैसे कि पर क्यों लगा रहा हूँ? पर डिफरेंशिएट करना है ना. इंक्रीज हो रहा है. पहले क्या हुआ था? डिक्रीज. पर 1996 के बाद क्या हुआ? इंक्रीज. इंक्रीज हुआ, तो प्रोपोर्शन चेंज. हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया ना. राइट, वेरी गुड. तो ट्रेंड चेंज होने को दिखाने के लिए मैंने हाउवर लिखा है. तो एग्जामिनर इसको दिखाएगा. अब देखो, यू माइट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस हाउवर, but this is really important. Why is it really important? Because read here, make comparisons where relevant. The examiner and the question itself is asking us to make comparisons. If we do not do this job, we will not score well. So we'll write Okay. however after 1960, both these proportions increased. Or you can, if you want to sentence formation में variation लानी है, both countries witnessed an increase
and both and the figures and the figure for both the countries. So that you can say around 4.9%. In what's the year? 2001. Here I made a mistake after 1996. So that's it. And I'm done with the first PP. Pehla body paragraph ho gaya. I've talked about both. They came together wonderfully. I did not have to do much work. This word is really important, showing the contrast. Otherwise, I don't think it's much complicated. It's pretty simple. ये भी simple है. थोड़ा मैंने sentence form variation करी है. अगर वेरिएशन नहीं करोगे तब भी चलेगा. वेरिएशन को हवा नहीं बना के मतलब एवरी वेरिएशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सबसे कम बैंस मेरे को इस चीज के मिल रहे हैं कि मैंने ये सेंटेंस डिफरेंटली लिखा है. वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट बात है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने हाउएवर लिखा है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने फर्स्ट ईयर का डेटा दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने लास्ट ईयर का डेटा दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या कहते हैं कि ये मैंने सेंटेंस डिफरेंटली लिखा है. यहाँ पे डिक्रीज लिखा था, यहाँ पे लिखा है विटनेस्ड एंड इंक्रीज. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि मैंने डिक्रीज लिखा है और इंक्रीज लिखा है, पर किस वे में लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. So that is what you end up writing in the first PP. Any doubts? I can move forward. Yes, sir. So now I'll talk about the rest of the countries. By contrast, I would use the word by contrast here. Now, why am I using the word by contrast? What does it mean? By contrast का meaning क्या है? अच्छा, meaning Sir, छोड़ो. opposite side. Opposite side. Very good, खुशबू. तो कुछ comparison show करने के लिए. ठीक है. I would not call it opposite. I would just say I want to show a comparison. ठीक है. मेरे को कोई कंपैरिजन शो करना है, मतलब कुछ डिफरेंट है. यूर राइट. एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं बोलूंगा, बट कुछ डिफरेंट है. तो अब क्या डिफरेंट है? देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन थी. अब बाकी तीनों में क्या है कि स्टेबल रहा, इसलिए मैं बाय कंट्रास्ट यूज कर रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि पहले दोनों में मेरे हिसाब से चेंज हुआ, पर अगले तीनों में कोई ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ. पर देखो, एग्जामिनर को ये बात समझ नहीं आएगी बस तुम्हारा बाय कंट्रास्ट पढ़ के. उसने गैस नहीं माना अच्छा स्टूडेंट ने बाय कंट्रास्ट इसलिए लगाया क्योंकि अगले तीनों में स्टेबल था, ऊपर ये था. तो एग्जामिनर को बताना पड़ता है. तो बताएंगे कैसे? बाय कंट्रास्ट के बाद मैं लिखूंगा ये इन द रिमेनिंग 3 countries, or you could have written their name, the proportion of workers or employees with illness absence remained relatively. पहले मैंने stable लिखा था, just for variation, unchanged over the decade, over the given decade. Decade इससे क्योंकि 10 साल है, 10 साल को इंग्लिश में decade भी बोलते हैं. So अब ये कंपैरिजन एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसलिए लगाया क्योंकि बाकी तीनों कंट्रीज में ये प्रोपोर्शन रिलेटिवली अनचेंज रही है. ठीक है. अब आई जस्ट गिव द डेटा. मेरे को 2 डेटा देने नहीं, एक ही डेटा देना है. प्रोपोर्शन तो अनचेंज रही है. ठीक है. सो द प्रोपोर्शन stood at the proportions stood at around or approximately and I'll give the 3 datas. So 2.5, 2 and 1 or 1.1 if you want. So I'll write 2.5. In and I'll write the name of the 3 countries in France, UK and Germany. Or respectively, अगर end में नहीं लगाना, we can put the respectively word at the beginning by making it a the respective proportions stood at
approximately 2.5%, 2%, and around 1.5%, 1% in over the given period. Over the given period इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोई change तो है नहीं, तो सारे period में यही unchanged है. So that's what I end up writing. So अगर कोई doubt है तो बताओ. That's it. My 2 paragraphs are done. It is as simple as that. So one of my students got this and she scored 7.5 bands. She wrote by this method. उसने इस method के साथ लिखा था. She scored 7.5. I think it's an easy method. Nothing much complicated here. You can easily write it. अब बताओ. If anyone has any doubts, I can help you with. And she wrote this simple only. कुछ hi-fi नहीं, बस इतना simple और कुछ नहीं करा उसने. So, anyone, any doubts? No, sir. Okay. So, moving on. Okay. अब पता है क्या प्रॉब्लम क्या है. Now I'll tell you a problem. ठीक है. इसका मेरे को बताओ. मेरे को इसका ट्रेंड बताना. पहले वाले का क्या लेते तुम? For this line, Netherlands. What's the trend for Netherlands? Can anyone tell me? The decrease है sir. This is Decrease है. Okay, decrease. Okay. And what's the trend you would take for Canada? देखो. Look at the Increase. starting point. Starting कहाँ पे हो रही है? Increase. 50 के आसपास. Increase. Ending कहाँ पे हो रही है? Decrease, right? हाँ जी Yes. सर decrease है. ठीक है. पर अगर तुम अच्छे से देखो. देखो दोनों का ट्रेंड सेम है. मतलब हमें इसको सेम पैराग्राफ में लिखना है. बट एक प्रॉब्लम. हाँ सर. ठीक है. देखो 1998 तक क्या हुआ? नीदरलैंड्स में क्या हुआ? 1998 तक सिर्फ बताना. क्या हुआ? Stable. Increase. इंक्रीज. राइट. देखो 50 से 60 हो गया. इंक्रीज हुआ ना. ठीक है. Yes. अच्छा. और मेरे को बताओ कनाडा में क्या हुआ? Decrease. तो अगर मैं अपनी अप्रोच से करता, मैं तो इनको इकट्ठे लिख रहा था. पर अब इनमें तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है. और अगर मैं 1998 के बाद देखूं तो ये डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया. तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है? लाइंस को ना इकट्ठे लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि चाहे ओवरऑल तो ट्रेंड डिक्रीजिंग है, पर अंदर कुछ और हुआ होता है. मतलब अगर तुम इंडिविजुअल ईयर्स देखो तो कुछ और ही चल रहा होता है. तो डिक्रीज हम ये कहना ना बड़ा सिंपल है. उनको कंबाइन करना ट्रेंड्स के हिसाब से वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता. सो वी कम टू द सेकेंड मेथड. तो हम सेकेंड मेथड को कैसे करते हैं? तो अब हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं. तो अब हम क्या करते हैं? हम लाइंस को नहीं डिवाइड करते, हम ईयर्स को डिवाइड करते हैं. ओके. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो यहाँ पे देयर आर 3 years. 1995 से लेके 1998 एंड देन 2005 7, right? Yes, I'll provide the connectors list. Sure, Khushi. Okay. So what I'll do is I'll divide according to years. So basically what I'm trying to say, ऐसे नहीं करूंगा कि पहली दोनों लाइनें पहले पैराग्राफ में, दूसरी दोनों. मैं पहले चारों लाइनें लिखूंगा फर्स्ट पैराग्राफ में. बट मैं चारों का कब तक बताऊंगा? सिर्फ कहाँ तक बताऊंगा? 1998 तक. बेसिकली मैंने ना 2 बॉडी पैराग्राफ बनाए. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आई टॉक टिल 1998. सेकेंड बॉडी पैराग्राफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1998 to 2007. सो बेसिकली मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ. पैरा 1, पैरा 2. सो आई एम नॉट डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू लाइन्स. ऐसे नहीं कर रहा कि पहली 2 लाइन. मैं डिवाइड कर रहा हूँ ईयर्स के अकॉर्डिंगली. 1995 से लेके 1998 पैरा 1, 1998 से लेके 2007 पैरा 2. दैट्स माय अप्रोच. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes sir. ठीक है. आपने comparison करा है that means. करेंगे हम कंपैरिजन. अभी वेट करते हैं. अभी मैं बताता हूँ. देखो चलो. Okay. अब एक काम. सर या यूसुफ सर इसको नहीं लेंगे, यूके को तो नहीं लेंगे. दोबारा दोबारा. यूके को. सबको लेंगे. सबको पैराग्राफ 1 में लेंगे. अब मैं बताता हूँ कैसे लेंगे. ठीक है. पर अभी एक काम करो. अभी ना तुम पैराग्राफ 1 कहाँ तक आना है? 1998 तक ना. राइट. यस. तो तुमने अभी भूल जाना है क्या? आफ्टर 1998 प्लीज अपने माइंड से निकाल दो. 1998 के बाद कुछ ग्राफ ही नहीं है. इतना कर Okay. सकते हो? कैन यू स्टॉप लुकिंग आफ्टर Yes sir. 1998? ओके चलो. Yes sir. तो हमारे पास 4 लाइनें हैं. चलो मेरे को चारों लाइनों के ट्रेंड बताओ. पहली लाइन का क्या ट्रेंड? नीदरलैंड्स. व्हाट्स द ट्रेंड? The Netherlands is increasing.
Very good. In 2000, so it Over has the period, rapidly 1995 increased in से लेके 19 हाँ 1998 तक ni- ठीक है has rapidly increased. rapidly increase. चलो second line, ये वाली line Canada Decrease. Has decreased from 60 to 1998. yeah but Has I just need declined. yeah declined. I just need the trend. Third line, what would you say for UK? The UK plateau. So it is a plateau. ठीक है stable. And fourth line, US It Decrease. has increased and then it has showed a increase दिखाया है सर इसमें. increase दिखा है 98 के बाद तो हम देख ही नहीं रहे हैं राइट ठीक है हाँ उसके बाद नहीं देख रहे हैं हम. अब इन चारों को डिवाइड करो तो तुम पहले इंक्रीज वाली दोनों लिखोगे तो कौन सी दो आ जाएंगी पहले नीदरलैंड्स एंड यूएस डू यू एग्री US. ठीक है Yes sir. फिर हम डिक्रीज वाला लिख देंगे और फिर हम कौन सा वाला लिख देंगे स्टेबल वाला Stable. गॉट इट तो देखो अब हमने चारों लाइनों को लिखना है बट हमने सिर्फ 1998 हमने हमने सिर्फ यहाँ तक लिखना है 1998 तक हाँ जी. इज इट क्लियर सो अब देखो ऐसे Yes कर sir. और ये अब years के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके हम लिख रहे हैं वी आर नॉट राइटिंग इट अकॉर्डिंग टू कंट्रीज वी आर डिवाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू years और फिर हमने अगला पार्ट करना है 1998 के बाद पहले हम पहला पार्ट करते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए सिंपल कर रहा हूँ ये दोनों लाइंस हमने इंक्रीज मानी थी बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम कंट्रीज को ही डिवाइड कर रहे हैं पर हम पहले पैराग्राफ में ऐसे नहीं लिख रहे कि पहली लाइन को खत्म कर रहे हैं हम सिर्फ 1998 तक लिख रहे हैं और ये स्केल तो चलो हाउ वुड आई एंड अप डूइंग दिस See, I'm just writing the body paragraph. The overview is the same method. That will come back if you have forgotten. That will come back. So body paragraph first. I'm writing about all the 4 lines. तो मैं चारों का data दे रहा हूँ. ठीक है. So what is the data about? The data is who were satisfied with healthcare. Percentage of people who were satisfied with healthcare. Okay. So I'll write in detail percentage of people who were satisfied with healthcare was around, if you look here, was around 55% in Canada, 55% and 50% in Canada and the Netherlands, respectively. While the figures stood much lower at only around at only 30% and 10% in the UK and 10% in the US. And I'll give the year as well. I'll give it to the beginning. Because end में बहुत सारे end हो चुके हैं इसलिए starting में डाल 1995 तो मैंने चारों का डेटा दे दिया पहली लाइन इतना करा और कुछ नहीं करा ऑल द 4 I've given the data in the first sentence तुम्हें लगेगा अगर तुम नहीं एक सेंटेंस में कर सकते कुछ नहीं होता यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के नए सेंटेंस में दे दो doesn't matter you give it to me in 2 sentences give me the data for all the lines यहाँ पे by ना लगाओ by contrast लगा दो कुछ ना लगाओ the figures stood at and both and लगा दो कुछ नहीं होता whatever you do if you need 2 sentences use 2 sentences I don't care give me the data for all the 4 is it clear Yes sir. ठीक है अब हमने ट्रेंड्स के हिसाब से डिवाइड कर लेना so we'll divide according to the trends तो हमने क्या डिसाइड करा था हम पहले इन दोनों में इंक्रीज मान रहे हैं इसमें डिक्रीज और इसमें स्टेबल तो पहले इंक्रीज वाले लिख रहे हैं the percentage increase अब एक बात नोटिस करोगे तो ये 50 से कितना हो गया 1998 तक कितना 50 से कितना हुआ है 60 पे आया है सर. ठीक है कितना परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ डिफरेंस कितना है 10%. ठीक है और अगर तुम यूएस का देखो तो स्टार्ट होता है 10 से कहाँ पे खत्म होता है 9 20. तो ये भी कितना इंक्रीज हुआ डिफरेंस कितना हुआ 10 सो कैन आई कंबाइन एंड से कि दोनों में 10% से इंक्रीज हो गया
मेरे को फिर Okay. लिखना नहीं पड़ेगा ना 60 हो गया 20 हो गया, मैं लिखूंगा दोनों में कितने से इंक्रीज हो गया 10% से। 10. तो मैं सिंपली ये लिखता हूँ द परसेंटेज इंक्रीज बाय roughly 10%, or it's 10%. I don't even need to write roughly in 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 the Netherlands and the US. And यहाँ पे लिख देंगे कब से कब तक. So we'll end up writing from 1995 to 2000 to 1998. So is it clear? No problems? इन दोनों में 10% से इंक्रीज हुआ है. कैन आई जस्ट erase this? चलो, इन दोनों में 10% से इंक्रीज हो गया, ये हो गया. याद रखना हम यहाँ तक बात कर रहे हैं, इसके बाद तुम नहीं देख रहे. ठीक है. So I'm done with this country and I'm done with the US. Now I can talk about this country कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है. तो I'll put up a by contrast here. And अब तुम सबको पता है मैंने by contrast क्यों लगाया, बताओ क्यों लगाया. Friends. कंपैरिजन Change. करने के लिए, Yeah, राइट. यहाँ पे इंक्रीज था. Comparison के लिए. Yes, comparison to by contrast, the percentage fell sharp. Sharp गिरा, देखो बहुत sharp गिरा है. to कितना पहुंच गया, to 20%. और बाय, अगर तुमने बाय के साथ ही बताना है तो बाय के साथ ही बता दो. बाय 35% in Canada over the same. And lastly, the UK percentage remained relatively unchanged. And I can put over the same period at the end. Or you can put it in the middle. By contrast, over the same period, the percentage fell sharply by 35% in Canada, and lastly in the UK. And in the UK, you can even avoid the lastly one. And in the UK, the percentage remained relatively unchanged. So you're done. अब हम चारों लाइनों के साथ कहाँ पहुंच गए हैं, 1998. Are you all good with that? हमने comparisons भी करे, हमने सबका बताया कि क्या हुआ, हमने चारों लाइनों का बताया, और हमें इकट्ठे नहीं लिखना पड़ा. हमें कनाडा एंड नीदरलैंड्स को इकट्ठे नहीं लिखना पड़ा, बिकॉज ओवरऑल तो दोनों में डिक्रीज है, मगर अंदर तो कुछ और हो रहा है. So I am able to make more comparisons, better comparisons if I divide it like this. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now what will we do? In the next paragraph, we are going to write from 1998 to 2007. अब 1998 से लेके 2007 तक लिखना है. तो चलो, let's divide again. So the first line is decreasing. Second line क्या लिखना चाहते हो? Flat. Sir, Flat. it's plain. It's plateau. चलो flat लेते हैं. Third line increase. This one. हाँ जी sir. And This fourth is one also plain. plain. ठीक है. Plain. तो ये दोनों का हम लिख देंगे. स्टेबल रहा, इसमें डिक्रीज लिख देंगे, इसमें इंक्रीज लिख देंगे. Okay. ठीक है. और हम अब इकट्ठे लिखना है, तो स्टेबल वाले हैं वो इकट्ठे So लिख. I have one question, sir. How do we come to know that we have to make a comparison by contrast? We have to do it. How would we come to know about it? जब ट्रेंड बदल रहा है. सी, यहाँ पे इंक्रीज था दोनों का. ठीक है. Okay. अब किसका लिखना है जो डिक्रीज हुआ. तो अब इंक्रीज Okay. उल्टा हो गया ना, So डिक्रीज. this will automatically will come to know that we have to go for comparison. But हाँ the question was not put up like that. But since we'll be doing it that way. हाँ, तो वो तो पार्ट है ही है ना क्वेश्चन का. क्वेश्चन में लिखा ही होता है मेक कंपैरिजन, तो हमने तो करना ही करना Okay, sir. है. ऑल करना ही है. Okay, sir. Okay, sir. Okay. वो तो पक्का लिखा है, वो हमने पढ़ना भी नहीं वो इंस्ट्रक्शन, वो हमें पक्का पता है, हमें करना ही करना है. ठीक है. ओके डन. सो विल स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. अब देखो, अब अगेन please forget about what happened before 1998. You don't care about it. You don't need anything to do with it. It is not, you don't care about 1998 से पहले क्या हुआ. 1998 का डेटा भी नहीं देना, वो यहाँ पे दिया हुआ है. ये 10% 35% में ये डेटा है, तो हमें उससे कुछ नहीं करना है. हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ट्रेंड्स बताना और फाइनल फिगर जरूर देनी है, तो हम बस ये करेंगे. ठीक है. तो अब हम लिखते हैं आफ्टर 1998 proportion of people satisfied, or instead of satisfied I can say happy with healthcare facilities. ठीक है. happy with healthcare
कहाँ पे इसमें डिक्रीज हुआ? fell in the Netherlands. It reached around 40%. While, and again, while is also a comparison word. If you need to know the difference between while and by contrast, I'll cover it later. But now I can't, otherwise I will go in another direction and that will take too much time and it will misdirect from the main purpose. While the proportion went up to uh, this country, Canada, 32, around 30% went up to around 32%. The problem here is I did not mention the final here, so I have to so I'll have to write here and reach around 40% in 2007. While the proportion went up to around Canada in 2007. So I am doing that. अगर ऐसे नहीं करना था in 2007 तो यहाँ पे लिख सकते थे from 1998 to 2007. You could have written that there itself, but we did not. So I end up writing it here. Doesn't matter. Doesn't make any big difference. Okay. Finally, in case of the remaining countries, which are what? This one is UK, and this one is US. So UK and US में stable rank, that's what I'll write. Finally, in case of the US and UK. Shits. Relatively stable, we can write again if you want. At around 30% and 20%. Can write from 1998 to 2007. We're done. So nothing much. That's it, 2 paragraphs. I was able to do it. 1 paragraph from 1995 to 1998, second paragraph from 1998 to 2007. This is called a break method. You take all 4 countries. I call it the break method. I call it so. And I just break it according to years. See, I'm breaking in both. But पहले में मैं लाइंस के हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ. मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पहले पैराग्राफ में ये दोनों लाइन है, फिर ये दोनों लाइन है. अभी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं ईयर्स के हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि पहले 1998 तक बताऊंगा. मैं 2 graphs लिखूंगा. First graph will end at 1998 in the first BP, and the second graph will start at 1998 and it will go till 2007. So basically, I'm just doing that. और कुछ नहीं कर रहा हूँ. पर इसमें comparison ज्यादा करने का मौका मिल जाता है. That adds to it. So make comparisons. You end up making more comparisons. Okay. Any doubts? Any questions? Also, so can we get some questions regarding this so that we can just have I have shared to as homework in the group. I was supposed to take class on Tuesday. I'll share it again today, but there was okay, so thank you. something that happened, so I could not. Okay. Abhi, now I want to discuss what I want to go further. You can even try this. देखो यहाँ पे भी you can put up a break in March or April. You can put a break and then you can say यहाँ तक stable है, उसके बाद increase. Right, like that you can do this here also. Okay. सर Yeah. सर लाइन ग्राफ में ओवरऑल में किस पर ध्यान दूं? ओवरऑल में ऑल टाइम दो फीचर्स. सो चलो एक बार ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं. ही रिमाइंडेड मी. लेट्स डू ओवरऑल अगेन वंस मोर. लेट मी ओके. टेबल की तरह ओवरऑल होगा और डिफरेंट. या विल डू द ओवरऑल हियर. चलो अब ये ग्राफ ना जब मैं स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ ना, वो इसको देखते हैं और डर जाते हैं. तो फर्स्ट हाँ ऑफ सर, मुझे भी यहाँ इसको देख के डर लग रहा है. तो बस देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं करना. इट्स वेरी सिंपल. इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्राफ्स. जितना देखने में डिफिकल्ट है उतना लिखने में इजी है. तो बस याद रखना कि देखने में जो चीज डिफिकल्ट है वो इसका ये मतलब नहीं है वो लिखने में डिफिकल्ट है.
So now, how would I end up doing this? तो चलो पहले overall की बात करते हैं. So overall, the first thing that I did, Sameem, I told, we are going to write the trends. So हमने सबके trends लिखे. तो कुछ सोचना ही नहीं, चलो सब lines का trend सोचते हैं. So ये 25 से start होता है, ये नीचे आता है, it comes down till around 15, ये फिर ऊपर जाता है, 25 के आसपास ही खत्म होता है. I would consider it to be a fluctuation. अगर तुम कुछ और मान लोगे कुछ गलत नहीं होगा, पर मेरे को लग रहा है ये फ्लक्चुएशन ही अच्छा रहेगा. तो फ्लक्चुएशन, ओके सर. ठीक है. सेकेंड लाइन देखते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है. देखो ये 15 में फ्लक्चुएशंस भी है. फ्लक्चुएशन ही लग रहा है. ठीक है, डन. हम्म. अच्छा, तो सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन फ्लक्चुएशन. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड लाइन. इट स्टार्ट्स वेयर? इट स्टार्ट्स एट 8. increased. तो And इंक्रीज है ये वाला. ये इंक्रीज मान सकते हैं, चलो, क्योंकि ये एंड अप काफी ऊपर हो रहा है ना. देखो स्टार्ट 8 पे हाँ होता है, जी. एंड अप 12 13 पे हो रहा है, इसको इंक्रीज मान लेते हैं. ठीक है, ये वाला भी हम इंक्रीज ले सकते हैं. ये भी इंक्रीज है. यस सर, 5 दिस से इज आल्सो लेके इंक्रीज. गोज अप, तो ये भी इंक्रीज मान लेते हैं. ठीक है, उसके अगले वाला भी इंक्रीज मान सकते हैं. Yes, ये sir. भी देखो, इट स्टार्ट्स एट 2 और कहाँ पे एंड कर रहा है? इट्स एंडिंग एट अराउंड 15. ये तो डेफिनेटली यस. इंक्रीज है. ठीक है, और लास्ट वाला भी इंक्रीज मान सकते तो हैं. ये तो इंक्रीज है लास्ट वाला. सी, इट स्टार्ट्स एट 0 और कहाँ पे खत्म हो रहा Yes, है? sir. सी, 0 पे 5%. तो नहीं खत्म हो रहा, कहाँ पे? कुछ क्या हुआ? 0 फोर से पे, फोर पे, फोर पे, हाँ, अराउंड 4. फोर. 4 तो ये इंक्रीज हो गया ना, 0 के आसपास से हाँ जी, हाँ जी. Yes, और sir. पहुंच गया. ओके. ये तो अब ओके 4 सर. में इंक्रीज हुआ, 2 में फ्लक्चुएट हुआ, तो पहले तो ये लिख देना है, सिंपल. तो देखो, तो किस चीज की परसेंटेज है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ टोटल एनर्जी. तो वो कह रहे हैं टोटल एनर्जी में से रिन्यूएबल एनर्जी का कितना हिस्सा है. तो जैसे अगर टोटल एनर्जी 100 बन रही है, उसमें से 25 सोलर से बन रही है, 75 वो कोयले से बन रही है, ऑयल से बन रही है. वो 75 तो हमें नहीं दी हुई, वो हमें केयर भी नहीं करना. 75 इज फ्रॉम ऑयल और समथिंग, आई डोंट केयर. आई केयर कि टोटल में से रिन्यूएबल का कितना हिस्सा है. 25 रिन्यूएबल, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इनको रिन्यूएबल करते हैं. तो ये 25% है. तो मैंने ये लिखना है, सर, राइट द परसेंटेज ऑफ renewable energy out of total energy. What is written in the question? I copy that. ये लिखा हुआ है of total energy. अगर out of नहीं लिखा, of total energy fluctuated in the first two countries, in Finland and Denmark, while it's the short form for the percentage of renewable energy of total energy. उसकी जगह मैंने it लिख दिया. It increased in the other 4 countries over the given period. That's it. My first feature is done. So, Sameem, is it clear? सबका ट्रेंड बता दिया, all the 6 lines. Okay, ma'am. It doesn't take Okay, much sir. time. ठीक है, लगता 6 लाइनें हैं, पर देखो लिखी तो 2 ही है ना. एक में फ्लक्चुएटेड वाली Yes, sir. 2 लिख दी, एक में इंक्रीज वाली 4 लिख दी. तो लिखने में 2 मिनट लगता है. Is it clear? Sir, highest, yes, sir. Highest वाला नहीं लाऊंगा इसमें. हाईएस्ट वाला भी लिखना है. अभी अभी एक ही बात हुई, अभी आ रहा हूँ इस पे. ठीक है, ऑल्सो. ठीक है, अब हाईएस्ट देख. तो देखो सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में बताओ कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. ये मत देखो Finland. ऊपर जा रही नीचे. Finland. फिनलैंड में. और अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, विच इज द टॉपर? Also Finland. फिनलैंड, राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. Yes, sir. कभी कोई और लाइन फिनलैंड के ऊपर आई है? No. देखो फिनलैंड के नंबर देखते हैं. अगर देखें फिनलैंड के 25 हैं, 20 हैं, पर बाकी सबके तो 15 हैं, कम है. फिनलैंड से नीचे ही है वो. Yes. अभी भी फिनलैंड से ऊपर आए Yes, नहीं. sir. सबसे ज्यादा फिनलैंड है. Yes, तो sir. क्या लिखना है? ओनली आंसर. In addition, फिनलैंड had the Finland. highest proportion, और Finland had the highest proportion of renewable energy. Throughout the given time, throughout the given period. Throughout the given period means from starting to the end. So देखो ये भी लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लिखा. और अगर यहाँ पे ऐड करना है ना, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो among the 6 given countries or among the 6 countries. इन 6 में से Finland had the highest proportion of renewable energy of total energy. अगर यहाँ पे of total energy भी लिख दिया, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. Of total energy throughout the given period. Whatever is given, I'm copy pasting. मेरे को लगता है कुछ रिपीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता.
पर ये दो मेरे फीचर्स हैं, दैट्स हाउ आई एंड अप राइटिंग। सो एनी डाउट्स तो बताओ। No, sir. Is it, sir, why not we include the lowest one? वी कैन राइट इट, पता क्या होता है, लेंथी होता जाता है। तो समीम, Okay. इस ग्राफ में तो इजी लग रहा है लिखना कि किसका लोएस्ट है। यूएस का, यू सॉरी, या विच कंट्री इज द लोएस्ट हियर? द यूके? या आई थिंक इट्स द यूके, राइट? सो यूके इज द If I लोएस्ट। write this, sir, it would be wrong or नो, इट विल it's नॉट बी okay. रॉन्ग, बट रिमेंबर कि इस ग्राफ में तो इजी है लिखना, कईयों में लेंथ इंक्रीज हो जाता है, बस इतना है, लेंथ ही हो जाता है कई बार। ठीक है, और इसमें थ्रू आउट नीदरलैंड्स था, अगर मैक्सिमम ही दो चेंज हो रहा हो तो फिर मेरे को वो लिखना पड़ता है। सो मैं लोएस्ट अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा लेंथ ना बढ़ जाए, बस, और कोई रीजन नहीं है। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, आई sir. गिव यू सिनेरियो। देखो देखो, ये वाला हमने लिखा था, राइट? अब इसमें तो देखो मैक्सिमम ही मेरे को डिवाइड करके लिखना पड़ा। यहां तक मैक्सिमम Yes, sir. कौन लिखा था हमने? Yes, sir. By telephone. एंड इसके बाद लिखा इन पर्सन। अब मिनिमम In को भी मैं person. डिवाइड करके लिखूंगा। यहाँ तक कौन है मिनिमम? तो इन पर्सन। फिर ये है, तो वो लंबा बहुत हो लेंथी जाएगा, हो जाएगा। लेंथी हो जाएगा। Yes, sir. ये प्रॉब्लम है। उस वाले ग्राफ में इजी था, वहां पे लिख सकते थे, तो गलत नहीं होता लिखना, बस समीम इट बिकम्स लेंथ, दैट्स। Yes, sir. ठीक है, सो Okay, sir. नॉट रॉन्ग, नेवर रॉन्ग टू राइट द मिनिमम, जस्ट वरी अबाउट द लेंथ। अगर लेंथ नहीं ज्यादा बढ़ रहा लिख। ठीक है, ओके। एंड सर, जब हम टू पैराग्राफ डिवाइड करूंगा तो किस पर ध्यान दूंगा एवरी टाइम अच्छा, ये मैं बताता हूँ, देखो। फॉर पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2? ठीक है, अब हमने डिवाइड करना है ना, अब ईयर्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं देखता हूँ कौन से ईयर पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। देखो, अब यहाँ तक क्यों? यहाँ तक क्या हुआ पहली लाइन में? डिक्रीज, इसके बाद क्या हुआ? इंक्रीज। तो ये मेरे को इस लाइन के लिए, इस पॉइंट, इस लाइन के लिए तो ये अच्छा ईयर है ना? ठीक है, यस सर। इधर इस, अब इस लाइन के लिए भी अच्छा ईयर है। यहाँ तक ये क्या रहा? स्टेबल। यस सर। इसके बाद क्या हुआ? यस सर, इंक्रीज। इंक्रीज तो हुआ। अब हमने बस ऐसे देखना है जो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा सूट कर रहा था, तो जहां पे मतलब जिस जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लाइंस के ट्रेंड चेंज होते हैं ना, वो लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इस लाइन का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस लाइन का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस लाइन का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। सी, इसको भी हम मान सकते हैं कि यहाँ तक स्टेबल रहा, इसके बाद ये यस सर। यस सर, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हुआ। इसको भी मान सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ, इस लाइन के बाद इंक्रीज हो गया। इस लाइन के लिए भी ऐसे मान यस सर। सकते हैं। मतलब रफली रफली करते करते 1986 मेरा अच्छा ईयर बन रहा है। तो लाइक दैट, तो हम ऐसे चूज करते हैं और हम उस लाइन तक लिख देते हैं। तो अब देखो, इसका लिखेंगे कि यहाँ तक डिक्रीज है, इसका भी लिखेंगे यहाँ तक डिक्रीज है, इसका लिख देंगे यहाँ तक स्टेबल है, इसका लिख देंगे यहाँ तक स्टेबल है, इन दोनों का इंक्रीज। तो पहले दो डिक्रीज, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये दोनों इंक्रीज। और फिर यहाँ पे आएंगे सारे यस इंक्रीज, सर। ये भी इंक्रीज है। That means, sir, for the first paragraph, we should divide three, two decrease, two is double, two increase. या First paragraph khalas, khatam. खत्म। Then second paragraph में and from 1991 to 2006, we can divide also this Yeah, right. six Yeah, component. but all of them are increasing, so you'll end up writing all increased. Okay, then we can say that All increased, line by right? line That sub increase, okay, that's it, and give the final sub figure. increase. Yeah, and give the final figure. Tell me last year में कितना था, वो बताना जरूर। ठीक है, Yes, sir. इंक्रीज होके इतना पहुंच गया, इंक्रीज होके इतना पहुंच गया। चाहे इन चारों को इकट्ठे बता देना, पर बताना जरूर, थोड़ा आइडिया दे देना ये पहुंच गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो और कुछ देना है नहीं, कुछ और नहीं देना, बॉडी बस मैं पैराग्राफ में? लिखा सेकंड पैराग्राफ में सब इंक्रीज हो गए, इंक्रीज होके इतना पहुंच गए, चारों भी इंक्रीज होके इतना 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 पहुंच गए, रफली ये चारों। मैं तो इकट्ठे दे दूंगा ये, कि ये पहुंच गए इतने 10 to 15% पहुंच गए, एंड फिर ये वाला इतना पहुंच गया 5%। बस ये करना है, सबका डेटा दे देना है, इंडिया का इंक्रीज होके इतना पहुंच गए फाइनल ईयर, बीच के किसी ईयर एंड वन,
Yes, sir. One thing is when we will write this in this graph for Yeah. the second body paragraph, can I write the followed by? I think no. No, it would not make. When you're giving the first year data, you can. जब first year का data देना है, तो देखो, when you start, if you look here, I'll show you. When you started here, you gave the data for all the 4 countries. Yes, sir. यहाँ पे you can use that followed by approach and give the data for all the 4. You can say सबसे ज्यादा Okay. नीदरलैंड्स में था, Mhm. कनाडा में था, कनाडा was followed by नीदरलैंड्स, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट था यहाँ पे और लीस्ट यहाँ पे था, चारों का डेटा आ गया, फिर वही में Respectively. या फिर खत्म कर, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर वो 1998 तक लिखना है. That will come later if you want, but वो पहले ही आके डेटा देने में काम आ जाता है. That's it. बाद में नहीं काम. Sir, just like first one, that means 1995. Can I write this in the same way for the 2007 when I write नहीं, वो in the होगा नहीं last ना, paragraph? अच्छा उसमें होगा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों. उस वाले ग्राफ में हो जाएगा, बट देखो यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते ना, हम पहले डिक्रीज वाला लिख रहे हैं फिर इंक्रीज वाला, Yes, हम sir. ऐसे नहीं लिख रहे ना, उसमें सब इंक्रीज है, इसलिए वहां पे शायद उस ग्राफ में हो जाएगा, पर समीम हर ग्राफ में Yes, नहीं sir. होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैं Yes, डिवाइड sir. उनकी वैल्यू के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड उनकी Train key, train key, हाँ train key, sir. हाँ, सो वो बनेगा नहीं हर जगह, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मगर ये सेकंड पे आ रहा है, फिर स्टेबल वाला थर्ड पे आ रहा है, सो वो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, हम ऐसे नहीं करेंगे ना, हम पहले डिक्रीज वाला बताएंगे फिर इंक्रीज वाला बताएंगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, हम Yes, पहले sir. इंक्रीज वाले बता रहे हैं फिर डिक्रीज वाले फिर स्टेबल वाले, लाइक दैट. That means ये अब हम ये तब कर पाऊंगा जब सेम ट्रेंड होगा. That means मतलब सेम all ट्रेंड होगा increase तो फिर or हाँ. all, yes, हाँ. sir, हाँ. all increase or all हाँ. decrease, then we हाँ. can say that हाँ, followed by फिर respectively वो बोल something देना, like that. हाँ फिर डेटा दे देना फॉलोड बाय करके कि 2006 में ये But when is different type of trend, that means increase वाला भी है and decrease वाला भी है, फिर वो then we बनेगा. never say like this. या यू कैन नॉट ना, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि Yes, पहले sir. डिक्रीज आ रहा है फिर Yes, sir. इंक्रीज आ रहा है, ट्रेंड्स डिफरेंशियल आ रहा है. सो देखो, द ग्राफ Thank you, लुक्स sir. डिफिकल्ट बट इट्स इजी, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे डिवाइड करके चलना है, दैट्स इट. Thank you, sir. ओके. ओके, एनी डाउट्स बताओ. सर नो डाउट्स, बट आपके क्लास मिस करता हूँ. आप Sorry, वेरी बिजी है. Tamim, my dog was so very sick. So, and he passed away day before yesterday. So I was just after him. I'll take more classes now, okay? But I'll end it here and we'll continue tomorrow. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, can we have the connector list also if Yeah, I'll share. possible? And so one more thing, is it possible we can have mock test for speaking classes? Yes. I'll just give me 5 minutes. I'll Okay, message sure. you. Okay. Yeah, Tushar.